हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। परफेक्शन आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 28 ऑफ अगस्त 2023 को हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। न्यूज़ एनालिसिस ऐसा होगा दैट वी विल स्टार्ट विद करंट अफेयर्स फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर इटसेल्फ एंड वी विल स्क्रॉल थ्रू द स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स बोथ पार्ट्स। इसके साथ साथ वी विल आल्सो डिस्कस प्रीलिम्स 2023 का एक क्वेश्चन एंड मेंस 2022 का एक और क्वेश्चन। वी विल डिस्कस बोथ ऑफ दीज with answers and hints. So let's begin. As you can see, there are multiple important news from this section, and you will see that how well we will cover it today. Now, first thing that is UPSC BYQ. ठीक है, on the beginning itself, and this question was from South Indian history, and it talks about that with reference to the ancient South India, Korkai, Pompuhar, and Mujiri were well known as. What were these places known for? ठीक है, तो अगर आपको पता हो, जैसा कि मैं बोलता हूँ अपने सेशंस में, that whenever you solve UPSC questions from ancient, so it will be asked more from economy and administration. So these are the two most favorite sections of UPSC when it comes to what ancient India. तो ancient India में ये दो चीजें प्लस मेडिवल इंडिया में भी यही दो चीजें हैं जो यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर आप देखो तो 2022 में दे टॉक्ड अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर। ठीक है, एंड इट वाज actually asked about that how to chronologically arrange the administrative setup of Akbar, as it said that uh, from the provincial level till village level, you need to arrange them properly, whether that is Ikta, Shik, Pargana. You need to actually arrange them chronologically and arrange them in an ascending or descending order. That was the question which was asked in UPSC 2022, and this is the question which was asked in UPSC 2023. So most probability of these questions of ancient India are from economy and administration. और अगर आप ऐसा देखो तो यहाँ पे फिर आपको economy and administration से there are only two options on which you can just eliminate the other two options, and you can just make a dot on these two options so that you eliminate the two and then you decide on the two. ठीक है, and always remember whenever there is this option about a religion in options from A, B, C, D, whenever there is an option or whenever there is an option from religion, it is just crossed down because this is less of an answer when it comes to economy and administrative terms, when it comes to terms from the economy and administration. तो अब हम पोर्ट्स और मतलब बी और सी में से कैसे एलिमिनेशन का मेथड यूज करेंगे। तो जितने भी आज तक यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, साउथ इंडिया से रिलेटेड, मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स इट आस्क्स पोर्ट्स ओनली, है ना। एंड आयरन एंड स्टील मेकिंग इंडस्ट्रीज वर नॉट देयर, और अगर वो होती तो हम इसको पढ़ चुके होते, है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली दीज आर पोर्ट्स बिकॉज मोजरी वाज अ prominent port, or Pompohar is already asked by UPSC. Now Korkai, Pompohar and Moziri are well known ports, and Sangam literature provides us about their information. और कावेरी पट्टनम अगर आपको याद हो, also known as Pompuhar or Puhad, was a premier Chola port in the early historical times. ठीक, now let's start the discussion for the editorial of the day, and this editorial talked about something known as the Himalayan blunder. And what is this Himalayan blunder and how should we navigate through this editorial is a well asked question. And this is simple, and you just need to understand the balance between economic developments
and ecological nits and grits of the policy making. ठीक है, economical and ecological nits and grits of policy making, because this editorial talks about the Char Dham Mahamarg Vikas Pariyojana, which was started by the government of India in 2016. अब जो ये योजना है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट की है 2016 में, व्हाट डज इट टॉक अबाउट एंड व्हाई इज इट गेटिंग इम्पोर्टेंट व्हेन इट कम्स टू आर डिस्कशन? बिकॉज this yojana is economically important. Why? Because it has a economical potential of generating employment and generating tourism based economy in this region. However, when we talk about the environmental impacts of such policies, so it was highlighted here in this editorial only, that is the fertile topsoil of fragile Himalayas. As you have seen, the landslides in the past weeks in Himachal Pradesh, the floods and the impact of floods in Himachal Pradesh has reached the gates of a Red Fort in Delhi. So that is how you need to understand this thing, that whenever a policy of such nature comes and whenever there is an this interaction between humans, between the development and ecology, at that point of time the sensibility and sensitivity has to be on the priority, and that is the point जहां से आपको ये start करना होगा. Now ये editorial author यहाँ पे highlight करते हैं two things. There are two authors behind this editorial and they highlight two things. One is the policy misuse or the exploitation of the loopholes in the policy, as any project more than 100 kilometers which impacts more than 100 kilometers needs environmental clearances through environmental impact assessment, and this requirement for Chardham project was evaded. How? By converting it into 53 small projects. And it also talks about a double laning with a paved shoulder. Okay? And now the point here is that why should you increase the road width unless there are the reasons which were highlighted in this Chardham project was security. There were security reasons, and as you can see that the widening of these projects will make the pilgrimage easier. Okay? And the author here highlights that the problems which have been created in Bhagirathi eco-sensitive zone and the Char Dham Mahamarg Vikas Pariyojana, plus the Agast Muni, Karnaprayag, Chamoli, Rudraprayag, Shivpuri, these dense forests have witnessed problems post the implementation of this Char Dham project. And now these problems are escalating, and now these problems have started escalating in the Bhagirathi eco-sensitive zone. Fine, because only this was the only pristine patch which was yet to be exploited. So this stretch, which is approximately 100 kilometer, could not be touched by this Chardham project because it needed a detailed EIA. However, recently this too has been started now. यहाँ पे भी start हो गया है what the work for construction. अब ऑथर का यहाँ पे क्या कहना है? ऑथर here highlights two things, that is what are the questions these questions author asks. और ये एक ऐसा तरीका है जो आप यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हो अपने एसे राइटिंग के लिए. ठीक है, कि जब भी आपको एसे आए, ऐसा एसे आए जिस एसे में हमें किसी इशू बेस्ड चीज पे काम करना हो, किसी इशू बेस्ड कोई ऐसे हो, तो उस ऐसे को स्टार्ट करने का ये बेस्ट तरीका होता है दैट यू आस्क क्वेश्चंस. हाउ डू यू आस्क क्वेश्चंस? सिमिलरली इट सेज दैट why did the defense ministry, which wanted a 2-lane meter width road and first place, and then it started requiring a DLPS, that is a double lane project, road width standard, and why are these, why and why? It asks questions and then it will answer these questions and it will give you a critical analysis of this project.
And this why, or this format of deliberating and this format of dialect is what you can adopt for your essay. ठीक है. Before the monsoon, उत्तराखंड गवर्नमेंट इंक्रीज्ड द कैरिंग कैपेसिटी. ठीक है. अब कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ह्यूमंस का फुटफॉल बढ़ेगा. और ह्यूमंस का फुटफॉल बढ़ेगा तो वो आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जो हमने देखा कहाँ पे, जोशीमठ, जहां पे हमने देखा दैट ड्यू टू इंक्रीज्ड फुटफॉल, ड्यू टू इंक्रीज्ड दिस हैंड प्रिंट एंड फुटप्रिंट, ड्यू टू इंक्रीज्ड carbon print of humans, the problems which are the ecologically sensitive areas and their problems have escalated and they have aggravated. And the most visible point of it was the Joshimath incident. ठीक है. And that's how it can be understood in the context of Chardham project. अब ये चारधाम प्रोजेक्ट में द इंक्रीज इन कैरिंग कैपेसिटी बाय द UK government and Uttarakhand government, it says that the vehicular traffic and the regulation of vehicular traffic, which was earlier asked about that it should be regulated, the increase in carrying capacity has set it apart, and now the problems have aggravated. और उसी की वजह से you have seen the loosening of the fertile soil and landslides and floods. ठीक है. और यहाँ पे हमें पॉइंट्स जो अपने नोट्स में रखने हैं, दैट इज द recommendations of the parliamentary standing committee on science and technology. It has pointed out that the ministry of environment, that the committee also believes that one size fit all approach to environment clearance should not be followed. First, as you have seen in Joshimath, Mussoorie and Dhanolti, which requires a more meticulous approach. फर्स्ट इज दिस दैट व्हाट आर द रिकमेंडेशंस ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, क्योंकि ये चीजें आपको स्टैटिक पोर्शन में नहीं मिलेंगी. दैट्स व्हाई यू नीड टू कीप इट with you. Second is saving the Gangotri glacier. How you will save this? How the author suggests here how to save the Gangotri glacier. It says that conservation of the Gangotri glacier, which is also the fastest receding glacier with an increase in vehicular movement. और ये जो कैरिंग कैपेसिटी है इंक्रीज करने की वजह से वेहिकुलर मूवमेंट इंक्रीज हो गया, जो मैंने यहाँ पे बोला था. और इसकी वजह से कार्बन सूट, कार्बन प्लस सूट, द कार्बन फुटप्रिंट एंड हैंडप्रिंट both are increasing, due to which the committee, another standing committee has highlighted this thing that carbon, black carbon increase होने की वजह से this glacier has started melting faster. और इसका fast melting has led to greed outstripping the need, है ना. तो अगर आप देखो तो जो हमारी नीड ही नहीं थी, दैट इज व्हाट गांधी जी राइटली सेड दैट अर्थ हैज इनफ for our needs but not for our greeds. And that is the point here made by this author, that we should reduce a few meters of this road, because this road, the tarred road, ठीक है, जो वो रोड स्ट्रिप बन रही है, जो वो वाइड रोड स्ट्रिप होगी, you can imagine just it as simply as you can imagine it by understanding this, that it's a glacier. ठीक है. और ग्लेशियर के बीच में एक ऐसा रॉड है जो हीट अप हो रहा है. ठीक है. और ये रोड जो है वो हीट अप हो रही है, वो रोड, और वो रोड जो हीट अप हो रही है उसकी वजह से इस पूरे एरिया पे, क्योंकि अगर आप देखो तो वो टार्ड रोड जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाते हैं गर्मी में. And that is simply a rod boiling the water, and it's the rod boiling the glacier and melting the glacier. That is the simple point, and that's the simple illustration which the author has provided you. ठीक है. तो आगे चलते हैं on the next editorial, and this editorial talks about India and China, and it says this editorial actually suggests that you should understand this thing that is simple. That is, on the upcoming G20, what should be done is, you should, we as India, as the host of G20 country, G20 summit, what we should do is we should start a formal arrangement for these bilateral talks, whether it's between India and China or it's between the other countries and India. And that is the place where we can start working on the relationships which is already on the hinges, on China restoring the status quo and India patrolling rights along the border. Basically, अगर आप
मेरी बात मानो तो you just need to have some patience, because post G20 there will be massive change in international relations when it comes to our content. ठीक है, तो G20 के बाद जितनी भी कंट्रीज हमारे पास आएंगी इंडिया में, जो अभी सितंबर में समिट होने वाला है, इतनी सारी कंट्रीज आएंगी, हर एक कंट्री से रिलेटेड देयर आर डेवलपमेंट्स, यूनाइटेड स्टेट से रिलेटेड डेवलपमेंट्स है, चाइना से रिलेटेड डेवलपमेंट्स आएंगी, एंड पोस्ट G20 वी विल अपडेट our notes and we will keep them updated post G20, because the pre G20 and post G20 summit, there will be entire difference with the with terms of bilaterals of India and all of its members of G20. तो 20 कंट्रीज है, 20 कंट्रीज के रिलेशंस को वी विल डील मेटिकुलसली, और हम इन जितनी भी ये जितने भी पार्टनर्स हैं ऑफ G20 प्लेटफॉर्म, we will deal with every bilateral because every one is going to be important. ठीक है, तो now as the foreign secretary Vinay Kawatra told the reporters that yes, there was a meeting, and like not a clear statement from the Ministry of External Affairs has been issued or published, but yes, no statement on talks has been issued, but yes, Vinay Kawatra told this thing that there are the issue of, which was underlined in the talks between PM Modi and Xi Jinping. The point was normalization of India-China LAC issues and India-China relationships, and that's how you can understand this thing. But the broader point over here is that wherever we want a proper diplomatic channel, that is track one, diplomacy, we need to set up formal arrangements for that. And in that sense, G20 is going to be a game changer for India's diplomatic tables. ठीक है, तो that's it. Opinion of the day, there is a interesting thing which is to be discussed here, and it's an undersea tunnel which can act as a national asset for India, and this undersea tunnel is to be built between the Fort Kochi and Waipin, which is an island. As you can see, it's highlighted here. ठीक है, the Kochi port and Waipin Island. The Waipin Island is 26-kilometer long island with a 2-kilometer average width. ठीक है, तो these two places will be connected with an what? With an undersea tunnel. And this point of information which is given over all of this editorial is not that important when it comes to national like UPSC level exam, but yes, there are some examples which are mentioned here. ठीक है, जो हमें थोड़ा सा याद रखना है, और which we can help, which can be asked in UPSC. ठीक है, because UPSC कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है. ठीक है, when it comes to the comparative analysis between 2-3 countries, है ना. तो similarly there are 3-4 channels जो यहाँ पे mention किए गए हैं. ठीक है, one is these tunnels. One is the channel tunnel across the English Channel, और English Channel is between UK and France. ठीक है, और what is this channel about? It's actually under this channel tunnel across the English Channel. This is not under sea, but it's underground tunnel. ठीक है, then this tunnel is about 50 kilometers long, and this tunnel is 75 meters below the sea bed. ठीक है, below the sea bed, it's not above the sea bed, it's not underwater tunnel. Then Eurasia tunnel in Turkey, which connects the Asian part of Turkey with the Eurasian part of Turkey with the European side of Turkey. And this tunnel is also this tunnel is a double deck tunnel, as you can see here, which is below the seabed, which links European side with the Asian side. Then the Japan's Sea-Can tunnel, and India also has launched a similar kind of thing, and it's just under talks. That is a tunnel across Brahmaputra river. ठीक है, तो this is your channel, Eurasia tunnel in Turkey, and this is your channel tunnel which is across the English Channel, and there is Sea-Can tunnel, and there is a tunnel for Brahmaputra also. Text and context में the minimum export price
imposed on basmati is $1,200 per ton. क्यों ऐसा किया गया है? बिकॉज बासमती का एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है. डू यू थिंक सो? नो. द पॉइंट हेयर इज दैट white rice is labeled as basmati और उसका जो एक्सपोर्ट हो रहा है दैट इज बीइंग प्राइस्ड एट लेस देन $1,200. और जब ये लेस देन $1,200 होगा तो उससे क्या होगा? जो एक्चुअल बासमती है उसका प्राइस गिरेगा. और उसका प्राइस गिरने का भी कोई दिक्कत नहीं था. बट प्रॉब्लम हेयर विल बी दैट द एक्सपोर्ट क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ दिस, दैट इज कि बासमती को मतलब नॉर्मल राइस को वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं विद द लेबल ऑफ बासमती. दैट इज व्हाट डिग्रेड्स द इंडियन एक्सपोर्ट्स एट द इंटरनेशनल लेवल एज द क्वालिटी स्टैंडर्ड गेट्स डिक्रीज्ड. ठीक है. एंड इसी चीज पे there is an editorial about the same thing. This government imposes restrictions on exports of basmati rice. And what is this basmati? As it says that the basmati rice valued less than 1,200 a ton to restrict possible illegal shipments of plain white rice by wrong classification it as basmati, and that's how it will be done. Four categories of rice exports by India are: first is raw basmati rice, parboiled or non-basmati rice. As you might be remembering this thing that parboiled rice को भी बैन किया गया था. This parboiled rice, its export was curbed at 20% only, and there was a 20% duty which was laid on the export of parboiled non-basmati rice. देन ब्रोकन बासमती राइस, ब्रोकन और ब्रोकन राइस जिसको नॉन बासमती ब्रोकन राइस बोलते हैं जो होता है, देयर वाज एन ब्लैंकेट बैन in September 2022 which was imposed on the export of broken rice. ठीक है. तो मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया आर वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्रा, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम एंड हरियाणा. इंडिया has a 40% share of world's total rice exports, out of which non-basmati forms the bulk of it. ठीक है. तो non-basmati rice is the majority in the rice exports of India. Plus, more than 75% of the basmati exports in 2021 were to ईरान एंड अरेबियन पेनिनसुला. तो सबसे ज्यादा जो राइस एक्सपोर्ट हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? वो ईरान और अरेबियन पेनिनसुला में जा रहा है. प्लस इन द नॉन बासमती राइस 55% वेंट टू अफ्रीकन कंट्रीज. ठीक है. तो बासमती एक्सपोर्ट वहां जाएगा जो लोग अमीर है, नॉन बासमती वहां जाएगा जो लोग गरीब है. ठीक है. इंडियाज नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट्स witnessed an astounding growth of 109% in from 2013 to 2021. ठीक है. तो टॉप इंपोर्टर्स ऑफ ब्रोकन राइस आर चाइना, सेनेगल, वियतनाम, Djibouti and Indonesia. So means Southeast Asian countries only. Then comes the editorial of the day, which talked about the state of scholarships for minorities. अब minorities के लिए scholarship क्यों देनी है? You should remember सचर कमेटी. सचर कमेटी was constituted 2005 में, 2006 में उन्होंने रिपोर्ट दिया था which said that Muslim minority was neglected in almost all the dimensions of development. और उसी लिए फिर there were schemes, scholarship schemes which were launched for the education of minorities. And the recent analysis by the Ministry of Minority Affairs data says that the beneficiaries of 6 central educational schemes have dropped to only 7% in 3 years. ठीक है. तो जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो अब नहीं आ रहा है. ईदर द ड्रॉप आउट रेट इज हाई और द एनरोलमेंट रेट इज लेस among these communities. And Niti Aayog also in its strategy document in 2018 points out that yes, there is an affirmative action which is the need of hour to improve socio-economic status of religious minorities. ये एडिटोरियल पूरे का पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं था, इसीलिए I just took 2 clips from this editorial and that's how you need to cover editorials. ठीक है. Because Niti Aayog and the data from Sarva Shiksha Abhiyan data plus the data from All India Survey on Higher Education and the way forward. ठीक है.
That is how you need to focus on only credible and authentic points. और ये पॉइंट्स आप लिख के रखो, और ये पॉइंट्स आपको काम आ जाएंगे. ये पॉइंट्स आप डायरेक्ट अपने आंसर में लिख सकते हो, बिकॉज देर आर हाई चांसेस ऑफ माइनॉरिटी और वेलफेयर, ठीक है, ओरिएंटेड टॉपिक्स से इधर एसए, एथिक्स में, सोसाइटी में, एजुकेशन में, पॉलिटी में, there will be some question or other essay which will be relevant to welfare perspective or affirmative actions or education, ठीक है, और the empowerment, participatory democracy, such things are important. और वहां पे आपको ये एडिटोरियल, ये डेटा और ये आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा काम आते हैं, ठीक है. मूविंग टू द एडिटोरियल ऑफ द डे विच टॉक्स अबाउट द राइट टू रिपेयर, ठीक है. तो रिसेंटली एप्पल हैज आल्सो agreed to this thing, yes, that right to repair is a right to repair, but this editorial talks about mostly about the US perspective of right to repair. But what actually is right to repair? Recently in India, Nidhi Khare, who is an additional secretary in the Department of Consumer Affairs, uh, chaired a committee, which the Nidhi Khare committee, which was set up to develop a comprehensive framework for right to repair. What is right to repair? Right to repair is an ability. This editorial also talks about this thing, that in a utopian world, what you have is, अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो वो प्रोडक्ट खरीदने के बाद वो प्रोडक्ट आपका हो जाता है ना. बट वो प्रोडक्ट खरीदने के बाद अगर आप उस प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट खराब हो गया, आप कहाँ से ठीक कराओ, कहाँ से नहीं ठीक कराओ, आपको फेंकना है, तोड़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग. बट दैट इज अप टू यू, दैट शुड बी अप टू you, because that is what idealism or that is what utopian world stands for. But actually if you see that there are copyright and there are intellectual property issues which are related to these products, which use microchips and which use software oriented technologies. और ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट हो जाता है फिर उन डिवाइसेस से, चाहे उनके सॉफ्टवेयर कोड्स को डिकोड किया जाए, उनकी फंक्शनैलिटी, जैसे एप्पल ने कोई प्रोडक्ट ले आया, आपने एप्पल का प्रोडक्ट कहीं और दे दिया, वहां से उसने सॉफ्टवेयर निकाल के अपने में रखा, उस सॉफ्टवेयर को किसी और कंपनी को बेचा, उन्होंने चाइना चाइना में दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम सेम तरीके का बना के लॉन्च कर दिया, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, आइकन आइकन चेंज कर दिया और लॉन्च कर दिया. तो दैट इज हाउ इट डील्स, है ना. आपके पास आईपैड है, आपके पास कोई एप्पल का आईफोन है, उसमें कोई नया फीचर आया है कैमरा में, विच स्टेबलाइजेज योर वीडियो एंड इट डज नॉट फ्लिकर, एंड दैट इज द पॉइंट जहां से वो स्टार्ट करेंगे उस इंटेलेक्चुअल थेफ्ट को लेना, और फिर दे विल स्टार्ट देयर ओन थिंग्स. इसीलिए देर इज दिस राइट टू रिपेयर डील. But the protection for intellectual property rights said that the right to repair or the process of repair should be done on the service centers only. ठीक है, तो जो एप्पल के सर्विस सेंटर्स है आप वहीं पे जाके रिपेयर करो, वरना आपकी वारंटी इरोड हो जाएगी. एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ राइट टू रिपेयर. क्यों ये हुआ था? बिकॉज दिस स्टार्टेड विद यूएसएस, originally originated in USA, where the motor vehicle owners demanded this right to repair act in 2012, which required manufacturers to provide necessary documents and information to allow anyone to repair their vehicles. क्यों? Because the product has been purchased by you. और अगर प्रोडक्ट के बारे में आपको नहीं बताया जाए कि इस प्रोडक्ट को रिपेयर कैसे करना है अगर ये खराब हो जाता है, तो then what's the fun of having that product? It means that you are not purchasing it and you are not owning that product completely, है ना. तो that is why this movement has started, right to repair. And in India also we have set up this committee. Let's wait for this committee to come up, and there will be a draft regulation and draft act for right to repair soon in India also. In the recent monthly episode of radio broadcast which PM Modi hosts, that is मन की बात, तो मोदी जी ने बहुत सारी बातें की, और उसमें उन्होंने the most important thing was about the women empowerment. As we know that this topic has been uh, like the most closest topic to UPSC ever, that is the women empowerment.
and we have seen that this photograph circulated on internet, that is the woman empowerment and the power of a woman team और द पावर ऑफ वुमेन साइंटिस्ट्स एट इसरो बिहाइंड द चंद्रयान 3। ठीक है, तो जब मोदी जी गए थे सुबह सुबह उनने वहां पे भाषण दिया, द वुमेन वेर सिटिंग देयर एंड द रोल ऑफ वुमेन हैज बीन हाईलाइटेड बाय मल्टीपल मूवीज आल्सो from the ISRO perspective and from the scientific perspective when it comes to India. So here we revise the women leaders of India: Rani Lakshmibai, Sarojini Naidu, Madam Bikaji Kama, Begum Hazrat Mahal, Annie Besant, Usha Mehta. You can also go through a long list is there. You can go through the women leaders of India in the past and women leaders of India in the present. ठीक है, and PM also highlighted the K Dhanapal, a retired Bangalore Metropolitan Transport Corporation bus driver. ठीक है, who studied the ancient inscriptions, and there is also Brain Dharmoth, the who is from the northeast area and from Meghalaya, and he won the Norgay Tenzin Norgay National Award for Adventure in 2004 for exploring the caves. ठीक है, and that is how the innovation and that is how the empowerment starts. And there is one more mention about अमृत कलश यात्रा, और इस अमृत कलश यात्रा में क्या होगा, दैट हर घर से थोड़ा थोड़ा मिट्टी कलेक्ट किया जाएगा और फिर उसको अमृत कलश अर्न्स में रखा जाएगा इन दिल्ली। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, कि कुछ कुछ की पॉइंट्स जिस पे मतलब मोदी जी बोलते हैं, तो देर आर चांसेस दैट yes these can be asked. Young heroes which Modi ji have like highlighted here, we can also just go through them and understand that who they are. Who is Pragati, who won a gold medal? Pragati, who won a gold medal with the Aman Saini in the compound mixed team। ठीक है, तो ये जितने भी हीरोज हैं और नेशनल हीरोज है और नेशनल हीरोइंस है, these need to be answered or these need to be quoted in your essay and any question which is related to women empowerment। ठीक है, then comes the ISRO releasing the graph of temperature variation of the topsoil in lunar south pole. So it was the chased, which is a payload on the Vikram lander, which is which is making this graph for the temperature of lunar soil. And then yes, the Pragyan digs deeper into the moon, and we are receiving. And there is one more point, that is the about solar winds, that how the solar winds may affect this. The solar winds may affect the data, and it may affect the if you say the communication, as we have already discussed this thing, that what are the effects of solar winds on the space missions, the communication and all। और यहाँ पे इस न्यूज में एक चीज हाईलाइट की गई है, दैट इज द प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य L1। दिस पापा पेलोड on the Aditya L1 is one of the 7 scientific payloads abroad, and this will study the effect of solar winds on the solar space and on the solar areas and on the communication between the solar missions and the satellites and the ground stations। ठीक है, आदित्य L1 जाएगा कहाँ पे, लैंग्रेजन पॉइंट 1 पे, और वहां पे क्या करेगा, इट विल स्टडी सन। एंड व्हाट इज द एनाटमी ऑफ सन? तो सन हैज sunspots. What are sunspots? These are darker, cooler areas on the photosphere. All these points are important. You need to understand this thing, that what are these points and what are these areas। ठीक है, prominence is a large structure often many thousands of kilometers in extent which surrounds the sun। ठीक है, done। It's just a flare which comes out। देन ग्रैन्युलेशन, ग्रैन्युलेशन क्या है, ये इस एरिया में होता है सन के। एंड व्हाट इज ग्रैन्युलेशन? दिस इज कॉज्ड ड्यू टू द थर्मल करंट्स राइजिंग फ्रॉम बिलो। डन। और यहाँ पे बनता क्या है, छोटे 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 ग्रेन्यूल्स बनते हैं ऑन द सोलर सरफेस। देन कम्स द क्रोमोसोम। व्हाट इज क्रोमोसोम? क्रोमोसोम इज अ लेयर अबोव द फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर के बाहर आता है क्रोमोस्फेयर।
and this layer where the density of plasma drops dramatically. ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ प्लाज्मा ड्रॉप्स, और उसके बाद आएगा आपका फोटोस्फेयर। उससे पहले आपका फोटोस्फेयर आएगा, फिर क्रोमोस्फेयर आएगा। और दिस फोटोस्फेयर इज द विजिबल सरफेस ऑफ द सन, जो हमें दिखती है। ठीक है, एंड देन देर इज अ ट्रांजिशन जोन जो बहुत ही थिन है, इरेगुलर लेयर है, relatively it's cool, the relatively cool chromosphere, which is this chromosphere, which is a bit cooler. This chromosphere is a bit cooler than the transition area. And the flares, what are flares? As you saw these solar winds जहाँ पे भी हाईलाइट किए गए हैं, और the flares which come out of the sun, it's just a sudden release of energy from the sun. What's convective zone, radiative zone, and core of the sun? These are the three layers of the sun. जैसे अर्थ का है कोर, मेंटल एंड क्रस्ट. What is corona? Corona is the sun's outer atmosphere. This is atmosphere, this is not a layer. Then coronal mass ejection. What is coronal mass ejection? This is a vast eruption of tons of plasma which comes out through the magnetic fields, और यही चीज है जो फिर सोलर विंड्स के थ्रू हमारे मैग्नेटिक स्फीयर में आती है, एंड देन यू कैन सी इट इन फॉर्म ऑफ auroras, okay, in the northern poles and southern poles. Then come to UPSC mains 2022 question. This question was from GS1, and this question asked about the color coded weather warnings of cyclone prone areas which are given by Indian Meteorological Department. ठीक है, सो इंडियन मेट्रोलॉजी और IMD, दिस डिपार्टमेंट इशूज कलर कोडेड वेदर वार्निंग्स. ठीक है, एंड दीज आर दी वेदर वार्निंग्स जो आपको पता होनी चाहिए थी. ग्रीन क्या है, येलो क्या है, ऑरेंज क्या है, रेड क्या है. डन. एंड साइक्लोन वार्निंग, अगर साइक्लोन आता है तो साइक्लोन की वार्निंग क्या है, लैंडफॉल हो गया उसके बाद क्या वार्निंग है, साइक्लोन वार्निंग आ रहा है, अलर्ट आ रहा है, तो कैसा कलर कोडेड वार्निंग आता है, बस. दैट्स इट विच वाज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन वाज 10 मार्कर. और अब इस क्वेश्चन को अगर ये इतना ही ज्यादा स्टैटिक है ना, तो हमने इसका मीनिंग भी लिख लिया. अब हम इसके मीनिंग के आगे एक एक लाइन और लिख देंगे. दैट्स द मोस्ट विच वी कैन डू. So how to improvise this answer and how to write this answer in a better way is by quoting Viparjoy. ठीक है, अगर आप विपारजॉय साइक्लोन का डेटा, विपारजॉय साइक्लोन पढ़ा होगा और आपको पता होगा दैट रिसेंटली इंडिया हैज फेस्ड दिस साइक्लोन एंड वी हैव incurred a loss of 12.5 crore, which was the economic loss which was highlighted by Ministry of Home. ठीक है, अगर आपको ये लॉस पता हो, अगर आपको ये पता हो दैट हाउ मच वाज डन टू सक्सेसफुली मिनिमाइज द लॉसेस ऑफ दिस कैटास्ट्रॉफिक साइक्लोन व्हिच स्ट्रक गुजरात, दैट इज हाउ यू विल इम्प्रोवाइज दिस क्वेश्चन. अदरवाइज दीज पॉइंट्स अगर आपने नहीं पढ़े होंगे तो देन यू आर एट अ लॉस, वेरी मच लॉस. ठीक है, बट अगर आपने पढ़े हैं, आपने कोट कर दिए, तो स्टिल यू आर एट एवरेज. ठीक है, क्यों आप एवरेज में हो? क्योंकि ये चीजें सबने पढ़ी है और वो चीज हर एक इंसान ये चीजें कोट करके आएगा. बट द प्रॉब्लम इज हेयर दैट इफ यू नो दिस थिंग और नॉट. डन. तो विद दिस वी कंप्लीट टुडेज डिस्कशन. आई विश यू ऑल द बेस्ट. हैव अ गुड डे अहेड. आर बैचेस आर ओपन फॉर एडमिशन फॉर BPSC. 23rd of August से बैच स्टार्ट है. ठीक है, अभी भी इसमें एडमिशन कंटिन्यू है. If you want to join it, you can contact us on our numbers. And if you need any help regarding UPSC, whether it's your mentorship, whether it's your strategy planning, whether it's your doubts regarding to the basic books, you're always welcome at Perfection IAS. Thank you. Jai Hind and Jai Bharat.